सुप्रभात। मैं स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ की इस पावन बेला पर विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वे ध्वजारोहण करने की कृपा करें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं प्रधानाचार्य महोदय से प्रार्थना करता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। Good morning. Beautiful weather and all of you look very happy. So a happy Independence Day to all of you. Now pay attention. Today is the Independence Day. We need to have a little discipline and some sacrifice. And welcome to the 73rd year of independent India. And wish all of you, our students and the staff, a very happy Raksha Bandhan. Okay. Well, this day needs no introduction. Today we rededicate ourselves to country's prosperity and analyze the flaws that we have inflicted on it through our deeds and actions. Today we nick time from our busy schedule. We have gathered here to pay respects to the martyrs and freedom fighters who relieved us from the shackles of British rule. Today we celebrate our Constitution. Today we celebrate our freedom. Today we celebrate our independence. Today, everyone, every Indian, from one part of a country to another part of a country, is chanting slogans like Bharat Mata Ki Jai, Jai Hind, with great spirit and energy, as you did just now. It is indeed the spirit of freedom and love for the land, but we all know this freedom is hard-earned. There are decades of sacrifices and struggles behind all of that freedom. The land on which we breathe on is thanks to the struggles of our great men and women in the lead of well-known heroes like Gandhiji,
Nehru, Subhash Chandra Bose, and many other freedom fighters. Remember, my students, freedom is a gift. It is a gift of sacrifices, sleepless nights, brutal tortures, and struggles did by our forefathers. History is an open chapter. It tells us about the sacrifices of our freedom fighters for our great nation called India. The freedom owes itself to the struggles of Mahatma Gandhi, the father of our nation. He stood like a rock for the rights of the Indians. He was imprisoned several times. He faced many hardships from the Britishers and also from the Indians when he withstood. We have another freedom fighter, our first Prime Minister, Nehru. He never compromised the rights of people. He sacrificed each and everything and supported the cause of independence. And this independence owes itself much to the sacrifices of our other leaders, known and unknown. Some of the leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lal Lajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and there are many other people, simple people, who did not live to see this great day of independence. In British India, we were under chains. You know how you feel when you are chained. Our rights were compromised. We felt suffocated. Our social, political, and economic conditions were very bad. And in the end, it was not an honor for Indians to live under slavery of foreign rule. I was told that the Mall Road in Nainital and many other cities, those roads were only for the Europeans and not for the Indians, even though it was our land. Slavery is a curse. You can see around the world, there are many countries who have no freedom, especially in African continent. We should be more than thankful to our leaders who had realized it. We have gathered here today not only to chant slogans and do formality. Our land needs us. Our country needs us more than anything. We have to fulfill the promises that we have been doing with our land. No doubt, we have free land. But this free land is surrounded by a host of problems. We are facing many issues today. Issues of overpopulation, take him there, youth unemployment, poverty, there are some teachers stand here, the small boys are here. Yes. Okay. Thank you. Now pay attention. Let him celebrate. Yes, he is also celebrating Independence Day. Okay, now can you make some sacrifice by keeping quiet? Yeah. The teachers be here. Apart from all these problems, our country has many good things to offer. We are a nuclear power country. We have a large and brave army. Our borders are protected and our enemies fear us. We are the world's largest democracy of free and happy people. We are politically powerful, economically strong, and militarily advanced. We have more freedom than any other country, and we have used it to quite an extent. But the essence of patriotism is still deficient, unfortunately. We are loud enough to sing the national anthem every day, but we shamelessly spit on the roads,
or dirty and destroy our sacred land, India. Our India has been on the road of development for quite a time and is developing as I speak. But opening of malls, pubs, five-star hotels doesn't indicate development. It's just a function of time and need. Today we are a free and most powerful country in the world. Our land, even our Nainital, is quite beautiful. We have all the resources. Our youth, we can see them here, are very talented in technology, engineering and medicine. We have a brave and bold army with us. We are a respected country in the world. Our friends like us and our enemies fear us. No country will dare to attack us. This day is very important to us, and especially all the Semites. Let's make a promise with ourselves to serve our country. I would love to see many of you joining the army or to become teachers. We have to work day and night. Surely the day is not far when our country, India, will be strong and powerful in every field. As a true Semite and Indian, let us take the pledge to keep our school and environment clean and beautiful. Today your sisters are going to tie Rakhi on this sacred Raksha Bandhan day. You are going to promise your sisters to protect and defend them. On this Independence Day, let us promise to our motherland to take care of our earth and our school by taking the pledge. So I invite the college captain to administer this pledge. Raise your right hand. The earth is our divine mother. Cleanliness is considered equal to godliness. We pledge that we will devote our coming days to maintaining cleanliness in our surroundings. We pledge to keep our school, our homes, our surroundings, our city, our state, and our country clean. We will always put waste in dustbins only. We will pick up any litter that is on the floor. We will not litter, not let others litter. We will make a difference and fulfill the mission of Swachh Bharat Abhiyan. As a tribute to the father of our nation, Gandhiji. Thank you, Kotari. Now let's end. Jai Hind! Little louder. The army people feel motivated. Jai Hind! Third time. Students of other schools should hear. Jai Hind! Thank you. God bless you. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस की इस 73वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर समस्त विद्यालय परिषद के प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं सभी कर्मचारियों का आत्मिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने व उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके त्याग व बलिदानों के कारण आज हम आज़ाद भारत में अपना जीवन सुकून से व्यतीत कर पा रहे हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जब 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दर्शाता है और हम सब भारतीयों को एकजुट भी करता है। हम सभी को एक भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम सब स्वतंत्र भारत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी को एक भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्रता दिवस उन सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हम उनके त्याग व बलिदानों को कभी भी भूल नहीं सकते। भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले अंग्रेजी शासन के खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो आज़ादी के लिए भारत के लिए सबसे पहली लड़ाई थी। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भी भूल नहीं सकते, जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए जवानी में ही अपनी जान गंवा दी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा किया और उनमें युवाओं की भागीदारी ज़्यादा थी। और फिर महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में हमें आज़ादी दिलाई। हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और एक महाशक्ति बनने के अपने रास्ते पर है। भारत एक विशाल विविधता का देश है और हमारी एकता हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। हमारा देश वित्त, खेल, शिक्षा और अलग अलग क्षेत्र में कई देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, तो हम अपनी भारतीय सेना को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके कारण हमारे देश में हमेशा शांति बनी रहती है। हम सबको अपने सैनिकों से प्रेरणा लेकर अपने देश को और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद। अब आपके सामने कक्षा 11 के विद्यार्थी पारस स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों और समस्त कर्मचारीगण, मैं इस पावन अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूं और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। यह दिन महान सत्य एवं अहिंसा आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित आज़ादी के लिए वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात असंख्य देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज़ादी के बाद हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा हासिल की है, जिससे देश के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति, वर्ग अथवा संस्कृति के लोगों को सहज जिंदगी जीने का मौका मिला है। ऐसा दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। किसी भी देश या राज्य की सामर्थ्य उसके सामने आने वाली चुनौतियों से नहीं, बल्कि उनको हल करने के ढंग से आंकी जाती है। स्थितियों के विश्लेषण, कानूनों, नीतियों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमें समाज में नैतिकता तथा मूल्यों को बनाए रखकर ही प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आज हम किसानों, जवानों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं के अथक प्रयासों के विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वैज्ञानिकों व अनुसंधानकर्ताओं के अथक प्रयासों का ज्वलन उदाहरण चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण है, जिसकी पूरी तकनीक स्वदेशी है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम अपनी सक्रिय और सकारात्मक सहभागिता से देश को ऐसे सम्मानित स्थिति तक ले जाएं कि देश के साधन संपन्न और साधनहीन लोगों के बीच का अंतर न्यूनतम रह जाए। हमारा यही प्रयास हमारी आज़ादी के महानायकों के प्रति श्रद्धांजलि एवं कृतज्ञता होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में एक देशभक्ति गीत के साथ
कक्षा 11 के विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके बोल हैं ओरी चिरैया। Thank you. We have few prizes to distribute, and we have 3 senior teachers here who have served this school and still serving. It's appropriate for them to give away the prizes. I invite Mr. Pant. Please come here. When I call, come fast, don't waste time. Our boys had participated in Asansol in table tennis, basketball and football. Under 19 table tennis tournament, all the team members, table tennis, please come in here. They have participated. We are playing for the first time. They played well. Tejas Ahuja, Shresh Gupta, Kunal Arya,
and Pranavat Bajaj. What's it? We have under 13 table tennis who are the runners up. All the table tennis players, please come in. And come fast. We have basketball players who played in St. Vincent's or another school. The participant certificate, all the basketball players, please come in. Look that side. That's good. Look this side. Okay, move this way. You can exchange if you get the wrong one. Come on, Devika. Thank you, sir. I invite Mr. Verma. Our football team under 17 were the winners in St. Patrick's. They are the winners of all India Christian Brothers schools. All the under 17 football players, please come here. And stand behind us. Give them a big hand. They made us proud. Come next. Stand here. Then come up for a group photo. Wait there. Cheer them up. They made us proud. Junior captain. We also have the best player of the tournament, Gaurav Dondia. And the whole team come here. This is the running trophy.
him. Thank you. Thank you, sir. Okay. Take the certificates. Trophy, give it up. Leave it in my office. Thank you, sir. I invite Mr. S.C. Shaw to distribute rest of the prizes. We also have our under 13 football team who are the overall winners, the champions. They played in St. Vincent School, Asansol. All the players, football players, please come up. Under 13 team, come that way. Easier. No, they are so stand here. You come. Give them a big hand. The same team won also in the Mount Abu. Stand there. Look this side. Also the highest scorer of the tournament, Vaibhav. Give him a big hand. And the winner, St. Vincent's, captain and all the players, please receive the trophy and make sure you give it back. Thank you. Now, Captain. Yeah, Captain. Our boys participated in the debate competition in Bhimtal and Swastik got an award. Swastik, please come here, give him a big hand in the debate. He came first consolation prize. And our boys participated in zonal art competition. These 5 boys, please come up. Anubhav Singh, Sapnoor Singh, here. Vandan Saini,
Atharva. Atharv. Our boys had gone to Lucknow for the debate and quiz competition. You have it? Name. Aditya Shah. He had participated in the debate. Saharsh Pandey. How fast? Rachit Tiwari. Ayan Raj Bajaj. Ayan Raj. Pradul Joshi. And Mohammad Aman. And Rachit Tiwari had also participated in LPS PB Pandey, the Orator of the Year. And our golf players had participated in the golf tournament. Shashank, S. Rawat, Manas Tiwari, Shaurya Tomar, Ayushman Shah, and the three boys in the computer chat competition. Third place, Omkar Shah. Ayush Agarwal. And for first place, Shaurya Joshi. Okay, thank you. अंत में मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी कक्षा अध्यापकों से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों को जलपान के लिए पंक्तिबद्ध रखें। धन्यवाद। जय हिंद। Okay, boys, the teachers help out. Stand according to your classes. Teachers will take the attendance. Then the refreshments will be given. All the teachers